जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो हमने बहुत विरोध किया। इस तरह से एसआईआर हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि किसी तरीके से चुनाव का मैनिपुलेशन हो रहा है और सरकार की साझेदारी इलेक्शन कमीशन के साथ है और उनकी सरकार के साथ है। खैर, वो तो हम बाजी हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास रखा चुनाव आयोग पे और कहा कि जितने लोग रह गए हैं कोई बात नहीं, हमने ट्राइब्यूनल बिठा दिए और ट्राइब्यूनल तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना और किस तरह से चाहे कटौती हुई हो वोटर लिस्ट में, उसके बारे में फैसले होंगे। तो उस बात को तो कई अर्सा हो गया। तो अभी हाल ही में एक आरटीआई के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कांग्रेस एमपी ईशान खान चौधरी ने, तो उसके जवाब में ये बताया गया कि जो टोटल अपील्स हैं जो दारिश हुई वो 38,10,620 और उसमें से आज तक 82,782 का फैसला हो चुका है, मतलब कि 2.17%। तो लगभग 98% का तो फैसला हुआ ही नहीं। कितने साल लग जाएंगे अगले लोकसभा के इलेक्शन तक हो या नहीं पाएगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गति है इन ट्राइब्यूनल्स की। और इस दौरान लोगों ने अपने वोट खो दिए और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो फैसले आज तक हुए हैं उसमें से दैट इज आज 82,782 फैसले हुए हैं, उनमें से 75,443 लोग के नाम गलत काटे गए। मतलब कि 91% लोगों के नाम 82,000 में से जो फैसले हुए हैं गलत काटे गए। ऐसा लगता है कि जो हमारा आरोप था वो सही था और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कहां कहां गलत पाते गए। आपको मालूम है कि जो टीएमसी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो रहे मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में से अपील फाइल हुई 7,47,305, डिसाइड की गई 487, मतलब कि 99.3% अनरिजॉल्व। मालदा में 5,31,149 और उसमें से 1,471 डिसाइड हुई, पेंडिंग 99.72%। नॉर्थ परगनाज में जो रेजोल्यूशन हुआ है 0.77%, 3,58,000। साउथ परगना में केवल 34 लोगों की अपील फाइल डिसाइड हुई है। ऐसे ही हुगली में, ऐसे ही पूर्व बर्दवान में 99.97 की डिसाइड ही नहीं। और जो उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जहां जहां भी डिसाइड हुई हैं लगभग सारे लोग बहाल हुए हैं जिनकी डिलीशन हुई है। तो सवाल ये नहीं कि डिलीशन हुई या नहीं हुई, सवाल उठता है चुनाव आयोग पे कि अगर जो बीएलओ वहां बैठा है वो अपने आप से तो नहीं करता, नाम तो नहीं काटता वोटर लिस्ट से अपने आप से, क्योंकि हर एक ही बीएलओ नाम काटने लगे और 90% नाम गलत तरीके से काटे गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बीएलओ का एक फैसला था, ये तो आदेश दिया गया होगा। अब जैसे हम अमित शाह जी से पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर में जो गोली चलाई गई उसका फैसला किसने किया, पूछ रहे हैं ना। तो इसी तरह हम पूछना चाहते हैं कि जो बीएलओ ने जो काम किया है
आदेश किसने दिया? कहां से आया था आदेश? ऐसे भी यहां भी तो एसआईटी होनी चाहिए ना। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है कि देश देश के लोकतंत्र से ऐसे खिलवाड़ करना, इससे ज्यादा घोर अन्याय क्या हो सकता है? मतलब कि एक फॉर्मर डिप्लोमेट कहता है, नवदीप सूरी के साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं नागरिक नहीं हूं। और कई ऐसे लोग हैं, एक नहीं है, कई ऐसे लोग हैं। एक और डिप्लोमेट है, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो कह रहे हैं कि साहब कैसे कह रहे हैं कि मैं नागरिक नहीं हूं। एक विंग कमांडर रिटायर्ड है, मोहम्मद शमीम, वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि आप नागरिक हैं। एक रमेश चंद्र आईएफएस ऑफिसर हैं, 75 साल के, सर्व्ड इंडिया एज एम्बेसडर इन बेलारूस, इन सो मेनी कंट्रीज, उनसे पूछ रहे हैं। तो ये सारा जो मामला है, इस पे तो मैं समझता हूं कि सारे देश की जनता को सवाल करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी करेगी या नहीं करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन अभियान चलना चाहिए। क्या इस देश में चुनाव आयोग तय करेगा किसको हम वोट, किसका वोट काटेंगे या किसका वोट नहीं काटेंगे बिना सबूत के? और बीएलओ तय करेगा? मैं नहीं समझता कि बीएलओ को कोई ऐसा हक है, और अगर करता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, तो आदेश तो चुनाव आयोग से आया होगा ना। वही गणेश कुमार जी आजकल बड़े वो जेनजी के साथ जुड़े हुए हैं लगता है। और एक और बात आपको बताऊं, अभी जो थर्ड फेज जो हमारा चल रहा है, वोटर्स लिस्ट का थर्ड फेज अभी चल रहा है, और उस थर्ड फेज में जो अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि लेटेस्ट सर्वे के अंतर्गत लग रहा है, दिल्ली का उदाहरण ले लो कि 1.45 करोड़, 1.45 करोड़ फॉर्म्स ही डिजिटाइज हुए हैं अभी तक। और पंजाब में 20 लाख इलेक्टर अभी आइडेंटिफाई हुए हैं एज डिसीज्ड। मतलब कि ये लाखों करोड़ों लोगों के नाम आप डिलीट कर दोगे तो चुनाव का फिर मतलब क्या है? तो आपके द्वारा देश की जनता के सामने मैं लाना चाहता था कि अगर ऐसे ही होने लगे, चुनाव आयोग सरकार के आदेश पे के आदेश के द्वारा काम करने लगे और उसको सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट करेंगे क्या? आप मुझे बताइए। अब चुनाव तो दोबारा हो नहीं सकता। और अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह से लाखों लाखों वोट की कटौती, गलती हुई वोटर लिस्ट में, तो वो किसी भी तरफ जा सकते थे वोट करते करते, खास तौर पे उन जगह पे जहां टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था। वहीं देखो 99% की तो फैसला ही नहीं हुआ, और जहां हुआ है वो 91% गलत डिलीशन हुआ है। तो पहली बात तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू, थ्रू यू, mention that recently a RTI was asked for, and in terms of that RTI by a Congress MP, Isha Khan Chaudhary, and he asked as to what are the total number of appeals that are pending before the tribunals which were set up by the Supreme Court of India.
pursuant to complaints made that lakhs of names have been deleted in West Bengal in the last election that was held. And the Supreme Court rejected our plea. We kept on telling the Supreme Court that there is something seriously wrong with the way in which the Election Commission is conducting itself and in the way these names are being deleted from voters' lists, especially names of people belonging to another community, names of those who seem to be, perceived to be in favor of the TMC in some of their strongholds. And the Supreme Court just rejected our contentions and said, no. This is the Election Commission has that right and the BLOs can do it. But the results are extremely frightening. Pursuant to the RTI, the total number of appeals total number of appeals submitted were 38,10,620. Disposed of are only 82,782. That is 2.17%. And of these, 91% of the names have been restored. That means of the 82,782 appeals that have been disposed of, 75,443 people's names have been restored. That's 91%. That means 3 out of every 100 appeals had received a final decision more than 4 months after the assembly elections. Now, question is, how did this happen? How is it that whenever the restoration takes place, 99% of the names have been wrongly deleted? It can't possibly be a coincidence that the BLO on his own was deleting names, because there can't be a uniformity in the deletion of names amongst BLOs across the state. And just as we asked the question, and the Cockroach Janata Party has been asking the question as to who fired at these young people at Jantar Mantar, means where did the decision making, at what level did the decision making take place? And I want to ask this question in the same terms, at what level did the decision take place directing the BLOs to delete these names? Because it can't be that the BLOs were doing it on their own. So obviously, there is a game plan of the government in cahoots with the Election Commission to ensure that deletion takes place so that the electoral result does not reflect the true electoral result. And if you really look at some of these facts, in most of the places where the TMC has a strong presence, in Malda, in North Parganas, in Murshidabad, in South 24 Parganas, Hooghly, Purba Bardhaman, Darjeeling, and other places, where TMC has a stronghold, the decisions there, 99% of the appeals have not been decided. And it will take years. Maybe by the time the 2029 Lok Sabha election comes, still the appeals are not decided. And remember this, that means that 91% of these people were entitled to vote and pursuant to the decision of the Supreme Court were not allowed to vote. That's what it means. And it seems that we were right. If you remember, the whole rationale of this whole process of SIR was that one person who is not entitled to vote should not be allowed to vote. That was the rationale. The rationale should have been that any person who is entitled to vote his name should not be deleted. He should be allowed to vote. That should have been the rationale. Ganesh Kumar applied the wrong rationale, did the wrong exercise, mala fide, to help the BJP to win the election. This is my charge. And the second phase of the election is on, and lakhs of voters are being deleted. For example, I'll give you in Uttar Pradesh alone, 2.05 crores. 13% names have been deleted. 13% names.
In Tamil Nadu, 11 anyway. Rajasthan, 5.7%. Gujarat, 13 to 14.5% names deleted. Where is this going to go? If you take the 9 states and the 3 UT states together in the third phase, the total number of deletions is 5.18 crores. And if you take 91% of that, if you use that percentage, you can imagine that more than 4.5 crores names would have been deleted. Where is this? I mean, what kind of election is this? So this was one issue that I wanted to place before you. And as you know, that several former diplomats there who've been, or Air Force officers, their names have been deleted, and they're saying, why should we have to? If this is what happens to us, what happens to the common man? Well, as you know, what happens to the common man, we saw it at Jantar Mantar. Then the second issue I want to raise, which is, I think, also equally important, is the very serious allegations have made by a sitting judge of the Supreme Court against the acting Chief Justice in Rajasthan. I mean, on very few occasions in the history of this country, one occasion where Justice Gogoi, along with 4 others, made a complaint against the then Chief Justice as to how the listing of cases was not being dealt with properly. The Justice Sandeep Mehta wrote a series of letters to the Chief Justice of India, present Chief Justice of India, raising serious allegations against acting Chief Justice Sanjeev Prakash Sharma and seeking his immediate replacement. And Justice Sharma has been acting Chief Justice for over 10 months, due to retire in September 2026. Justice Mehta, sitting Justice Sandeep Mehta, wrote 3 letters to the Chief Justice, 2nd, 3rd of August, 10th of August, 17th of August, and the Collegium, alleging that there has been a misuse of the master of the roster. Remember, I've been crying about this for years, about this misuse. Well, now you have proof of that fact. And that also articulated by a sitting judge of the Supreme Court. The master of the roster, as you know, what does it mean? It means that the acting Chief Justice or the Chief Justice can assign any particular case to any judge, or is entitled to withdraw any case from any judge and place it before himself, or place it before another bench. This happens quite often. Of course, we can't raise questions about it, even though the entire bar knows why, it speculates as to why this has been done. And Justice Mehta says this is gross maladministration with serious questionable activities. And he talks about innumerable such instances. And he says that this is unbecoming. This conduct is in a manner unbecoming of the leader of the institution. And he says that rich litigants' cases are suddenly being placed before him. And he says, and I quote, it seems to be possessed of a license, that is Justice Sharma, acting Chief Justice, quote, seems to be possessed of a license to hit sixes ever since the day on which he took over as acting Chief Justice, close quote. And he gives some instances. He also alleges, Justice Mehta also alleges, and I quote, frequently threatens his colleague judges of retributive action, including transfer, close quote. And other judges have complained. Now, this raises again the same question.
should the master of roster practice continue? Why should cases not be listed in accordance with an algorithm so that you cannot decide which judge is going to hear which case? Because unless there is transparency, there will be suspicion. If there is suspicion, then the credibility of the institution would be put in question. If that is put in question frequently, people of India will lose confidence in the judiciary and in the institution. That's not right. That's the only institution that stands to ensure that people are protected and that justice is obtained in the highest court of this country, or in the high courts of this country, or for that matter, in any court. Now, what can I say? I can't say anything. It is for the Chief Justice of India to decide. But this is a sorry state of affairs. It's yet another nail in the credibility of the institution. It hurts the credibility of the institution. We pray and we hope that these malpractices are nipped in the bud, and they should not be allowed to continue. एक और मुद्दा आपके सामने जो आया है, उसके बारे में आपके द्वारा मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक हमारे जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, जस्टिस संदीप मेहता। उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, 2-3 अगस्त इस साल की, 10 अगस्त पे और 17 अगस्त, और कहा कि वो जो राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनके ऐसे फैसले हैं, खासतौर पे कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा या अपने पास बुलाया जाएगा, जिससे साफ जाहिर है कि ये जो कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा हानिकारक है। और ये कह रहे हैं कि ये ग्रोस मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो फैसले ले रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, वो बड़े ही दुखदायी हैं, दर्दनाक हैं, क्वेश्चनेबल हैं। और उन्हें कई उदाहरण दिए हैं कि कौन कौन से केसेस उसने अपने पास लगाए, और ये सारा मामला मास्टर ऑफ द रोस्टर के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस या कोई भी चीफ जस्टिस किसी भी स्तर पे किसी भी हाई कोर्ट में ये फैसला करता है कि ये केस उसके पास जाएगा, ये केस उसके पास जाएगा, ये मेरे पास आएगा, तो निश्चित रूप से शंकाएं उठेंगी। और जब शंकाएं उठती हैं तो निश्चित रूप से फिर जो इंस्टीट्यूशन है, जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। सवाल उठेंगे तो शक होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम होता रहेगा, और अगर कॉन्फिडेंस कमती होगा, विश्वास कमती होगा, तो निश्चित रूप से जो जनता है वो सोचेगी कि हम अगर इस संस्था पे विश्वास नहीं कर सकते तो कहां करेंगे। एक बहुत ही, मैं समझता हूं, गंभीर मामला है। पिछले 10-12 साल से मैं खुद इस मामले को देश के सामने लाना चाहता हूं, तो कई बार लाया भी मैंने। इनफैक्ट उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब के खिलाफ मैंने एक याचिका डाली थी, फिर उसका हमने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन यही बात थी। और ये मैंने नहीं कही थी, ये 5 जजेस ने कही थी, सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें जो लीड थी वो आपको मालूम है कि चलमेश्वर साहब, जस्टिस गोगोई, जिनका अभी कार्यकाल मेरे ख्याल खत्म हुआ है राज्यसभा में, जिनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का फैसला हुआ। खैर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा हमारे हाई कोर्ट्स में, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, बड़ी दर्दनाक। वो कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो मामले हैं वो अपने कोर्ट में लगा रहे हैं, और इनके बारे में उनके अपने जो कॉलीग्स हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, उन्होंने इन पे सवाल उठाए कि ये गलत हो रहा है, फिर उनको धमकाते हैं। ये सारे आरोप जो है ये सिटिंग जज जस्टिस संदीप मेहता ने लगाए हैं, और मैं समझता हूं कि इसका संज्ञान होना चाहिए तुरंत। चीफ जस्टिस साहब इसको जरूर, मैं समझता हूं कि क्योंकि वो सारे परिवार के वो हेड हैं,
तो कोई ना कोई गंभीर कदम उठेगा और फैसला होगा। और एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि वो है हमारे स्कूलों की बात। आपको मालूम है कि किस तरह से राजस्थान में जो हालत है स्कूलों की, जितना कम बोलो उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो डेटा हमारे पास है, राजस्थान असेंबली का जो डेटा है, उससे हमें जानकारी मिली है कि 611 सरकारी स्कूल राजस्थान में हैं जिनकी वो अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। 611 स्कूल ऐसे कोई मतलब कि यहाँ गुब्बार पढ़ना रखता है, कोई पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, ये तो हालत है सरकारी स्कूलों की। और 64,484 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। 2047 स्कूल ऐसे हैं जिनके टॉयलेट्स नहीं है। 1049 ऐसे हैं जहां पानी पीने की सुविधा नहीं। और 3,758 ऐसे नहीं, 68 ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल बिल्डिंग ऐसी खराब हालत में है कि वो अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी है। खतरा है, मतलब बच्चों को खतरा है। ये तो खैर अभी तो देखो कहाँ कोई आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई कोई जाना चाहे वहां स्कूल का मुआयना करने के लिए तो वहां रोक लगा दी कि आप जा नहीं सकोगे। तो आपको मालूम है कि जब ये सीजेपी के लोग वहां गए तो राजस्थान स्कूल में, तो इनके पथराव हुआ इनके खिलाफ। ये तो हाल है हमारी सरकारों का कि अगर बच्चों के लिए कुछ करना चाहो तो वहां पथराव होगा और आदेश हो जाएगा कि आप स्कूल में पता नहीं कर सकते कि क्या वहां हालात है हमारे बच्चों के। तो अगर सरकार यही काम करने चली है तो फिर ये विकसित भारत की क्या बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उनको मालूम है कि 1947 2047 तो उन्होंने देखेंगे नहीं। तो बोलते रहे विकसित भारत, कह सकते हैं कि वो तो 21वीं सदी में विकसित भारत होगा। ऐसे ही सपने दिखाते रहते हैं रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज। और फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको असलियत दिखा दी। वो तो सपने दिखाते हैं, उन्होंने असलियत दिखा दी कि ये तुम्हारी असलियत है। और लास्ट ऑफ ऑल, sorry, on the Rajasthan, I just wanted to mention that of late, as you know, the Cockroach Janta Party went to a school in Rajasthan, and all of you know, I think the entire nation knows as to what the state of that school was, and it was being run in a cowshed, and how there was opposition for them to enter the school, and ultimately there was a stone throwing on these people. That's a fact. But if there is official data that is available with me now, which was placed before the Rajasthan Assembly, and I think I want to share it with the people of India, that 611 government schools are functioning without their own buildings, and 64,484 government schools don't have buildings. 2,047 lakh toilets, 1,049 lakh drinking water facilities. 3,768 school buildings are entirely dilapidated and declared unsafe for the academic year, for academic use. 83,783 classrooms across the state were described dilapidated and unsafe. And in order to serve this infrastructure gap, there has to be investment of 20,000 crores. ये तो हाल है हमारे देश की शिक्षा का. If this is the state of education in our children, what is the Viksit Bharat that the Prime Minister keeps talking about and repeating daily ad nauseum? Is this the Viksit Bharat that he is thinking of?
And as you know, the Chief Minister of Uttar Pradesh has now said that nobody will be allowed to inspect any school in Uttar Pradesh. Prohibited. In other words, they don't want people to see how our children are being treated in schools, how our children are learning in schools. This is shocking. Lalit Kumar, Director of Secondary Education, has issued a circular restricting outsiders from entering government school premises without prior permission from the principal. Which principal will allow it? This is extremely worrisome because in the absence of a strong education foundation of our children, there will be no possibility of their competing in the global community, because we are in a global community now. There are other details that I have, but I don't think I need mention. We'll do it on another occasion. The last issue that I wanted to touch upon was this one nation, one election. I have a basic problem with this whole concept of everything being different, being made into one. One examination for India, one nation, one election. One party deciding what should be sung, what should not be sung. One party deciding what you should eat, what you should not eat. One party deciding what you should dress, how you should dress. And if you look at outside this window, you will find that the color green has about 1,000 different colors. Just the color green. The roses that you see in gardens have 1,000 different colors. Where is uniformity in nature? Each one of us is different sitting here. Can you make us uniform? Uniformity by itself is incompatible with nature. It's incompatible with human nature. So what do you mean by one nation, one election? Each state has different aspirations. Each state have different issues. Each state has different problems. Each state has a different mindset. Each state is struggling with itself, with the problem that it faces that another state does not face. And fundamentally, when the constitution makers decided that a 5-year term is essential for any election, for the government to demonstrate what it can do in 5 years. Why is a 5-year term necessary? For example, the President of the United States has a 4-year term. But all elections and governments have a fixed term, and the rationale for it is that in that fixed term, you, having promised the electorate as to what you will accomplish, that term will help you to demonstrate whether you've accomplished it or not, so that the people can judge whether you should be elected again or should be thrown out and someone else should be elected, some other party has to. That's the fundamental basis of a fixed term election. They've done away with it. This is basic structure of the Constitution. Now, for example, you will have an election in Uttar Pradesh in 27. You'll have to have another election in 29. If you want to implement this in 29, all the states where there are going to be elections now in 2027, their term will end in 2029. What promises will they make to the people of this country? And how will those be accomplished? You're changing the very basic structure of the Constitution. On what ground? That there's too much expenditure. I mean, you can spend thousands of crores in the kind of things that you do on your personal campaigns.
for political parties campaigns, thousands of crores. And expenditure is the only. What is the expenditure? It's probably hardly 1% or not even that. As if one nation, one election will not have any expenditure. And you know what will happen? The dreams of people of the states which go for election will be lost in the noise of the parliamentary election. We will hear only the Prime Minister and nobody else. One voice, not just one nation, one election, but one voice. One religion, one people, one mindset, one dress, one language, one cuisine. Vegetarian India. What a sad state of affairs. How unfortunate this country is to have a government which believes in the number one. Very sad. There are many other things, साथ में. There is also the power with the Election Commission, which has never happened in the history of India, to actually set aside an election. That power was the court. Now there is a provision here which gives that power to the Election Commission. In other words, the Election Commission is further being empowered. Anyway, जो आखिरी मुद्दा आपके सामने जो मैं रखना चाहता था, वो चुनाव आयोग वो एक जो प्रावधान ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का पार्लियामेंट में, जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है. तो इनका मानना है कि इस देश में केवल वन नेशन वन इलेक्शन होगा. और वास्तविकता तो ये है कि किसी चीज में ऐसी यूनिफॉर्मिटी होती ही नहीं. अगर आप प्रकृति के बारे में सोचो तो कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है. आप जानवरों के बारे में सोचो तो कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है. रंगों के बारे में सोचो तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. मनुष्यों के बारे में सोचो तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे यही सोच है ना कि मैं ही रहूंगा और कोई दिखे नहीं, मैं ही मैं हूं, जो 2014 से चलता आ रहा है. और मुश्किल ये है कि इनको ये मालूम नहीं कि जो बुनियादी तौर पे जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जब तय हुआ था कि जब भी इलेक्शन होगा, जब भी चुनाव होगा, कि 5 साल के मुआद दी जाएगी, हयात दी जाएगी कि 5 साल में जो भी राजनीतिक दल है अपनी विचार रखेंगे 5 साल से पहले कि हम इलेक्शन जब अगर हम चुने जाएंगे तो हम निश्चित रूप से ये कार्य करेंगे. वो मैनिफेस्टो जो होता है, हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है. तो संविधान जिन्होंने बनाया था उन्होंने सोचा कि 5 साल का समय देना चाहिए किसी भी सरकार को. और कई देशों में 4 साल का समय है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है. तो निश्चित रूप से ये तो तय होता है कि हमें समान समय मिलना चाहिए किसी भी सरकार को कि जो मैंने मैनिफेस्टो में आपको वायदे किए थे वो मैं पूरा करूंगा इस कार्यकाल में. तो अगर आप कहोगे कि ये नहीं 5 साल का टर्म नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो बुनियादी तौर जो हमारा जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं अपने संविधान का, उसका उल्लंघन हो रहा है. और अब देखिए 2027 में अब इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और बाकी भी प्रदेशों में इलेक्शन है. तो अगर उन प्रदेशों में जो इलेक्शन है तो 2029 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से ये 2000 का टर्म इनका खत्म हो जाएगा. 2 साल का टर्म खत्म हो जाएगा. ये तो 5 साल का टर्म है ना. तो उसको रद्द क्यों कैसे कर सकते हो आप? कैसे रद्द कर सकते हो? और फिर 5 साल के कार्यकाल में अगर कॉन्फिडेंस मतलब कि सरकार चेंज होती है, सर कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो वो भी इलेक्शन 2 साल के लिए होगा.
या 3 साल के लिए होगा या 4 साल के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा। क्योंकि अगर किसी सरकार के कार्यकाल में जब ये कानून पास हो जाएगा 2029 में, समझिए 2031 में एक सरकार गिर जाती है तो उसका टर्म भी 3 साल होगा। और अगर 2033 में गिर जाती है तो उसका टर्म 1 साल होगा। तो 1 साल कौन इलेक्शन लड़ेगा? कौन अपना मैनिफेस्टो रखेगा आपके सामने? कार्यकाल पूरा कैसे करेगा वो? तो एक मजाक हो गया ना। आप इलेक्शन को एक मजाक बना रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसके पीछे सोच क्या है वो तो हम जानते हैं कि आप अपने, जैसे इन्होंने हर चीज पे एग्जाम देखो, नीट एग्जाम देखो, भाई हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहते हो आप, इसीलिए घोटाले होते हैं। आपकी क्या जरूरत है नीट एग्जाम की कि हर एक एग्जाम सेंट्रलाइज हो? क्यों? अब बाकी देशों में ऐसा है नहीं। पावर आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। आपने सब संस्थाओं पे तो कब्जा कर लिया और जो रक्षा करने वाला है वो रक्षा नहीं करता। कभी कभी कहां जाए जनता, कहां जाए? और इस कानून में आपने ये भी हक दे दिया, अभी तो कानून बना नहीं, ये भी हक दे दिया कि इलेक्शन कमीशन चुनाव भी रद्द कर सकता है। तो होगा क्या? निश्चित रूप से हम चैलेंज करेंगे और हम चाहेंगे कि देश की जनता जागे और ये आवाज उठाए कि हम देश की बुनियाद, जो संविधान की बुनियाद है, उसको हम बदल नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, on the same issue, 1 nation 1 election, 2 days back, P. Chidambaram said to the Parliament panel regarding the 1 nation 1 election that it's unconstitutional. Do you agree with that? I said that myself. I also went to the panel. That's why I'm saying it's contrary to the basic structure. I've already deposed before the panel. Sir, I have one question. Listen. So I'm saying that yesterday Supreme Court issued notice to the 20 TMC MPs who have formed a separate block in Lok Sabha and they have got permission of the Speaker to sit together and they want to merge into NCPI. Yesterday, Speaker has also sent them a notice for their reply. Rather late, no? Yeah, rather late. When I think the Speaker was waiting for the Supreme Court to move so that it can also move. The Speaker can also move. But they are saying that they are 2/3 and they are qualified, they cannot be expelled. But 2/3 will become zero soon. How, sir? Because this is all unconstitutional. They will be thrown out. You watch. But Aam Aadmi Party, when they merged in Rajya Sabha with BJP, they were not thrown out. They should be. Somebody should move there also. In Shiv Sena also. If somebody should move there, Shiv Sena has moved. I'm arguing a matter already before the Supreme Court. Right now, I think TMC has moved, and I don't know about NCP. It's not for me to decide what other parties do, but it's so completely unconstitutional. So you have also I myself moved a petition. I mean, how can you fight an election on one symbol and represent parliament in another symbol? Be a member of parliament of another party under another symbol? I mean, you ask me. Which channel are you in? ABP. You can go to NDTV and say, I represent NDTV. But you're not elected, no? If you're elected, then you can't go to somewhere else and say, I am this thing. Take me as a member of a party which has no presence in parliament, which had no presence in parliament, on whose symbol I did not get elected. Symbol is given by the party to you. You are only a representative of the party. You can't fight an election without such symbol. You can't win an election without such symbol. And yet, you will be represented in parliament of a party which has no symbol, on which you did not get elected. If this is constitutional, then God save this country. सर, 2 सवाल है। एक तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस पे निशाना साधा एक देश एक चुनाव का ही मसला है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए चुनाव नहीं चाहती एक देश एक चुनाव क्योंकि वो अपनी जमीन खो रही है, इसीलिए नहीं चाहती। और दूसरा एक सवाल है, क्लैरिफिकेशन भी चाहेंगे। आपने कहा कि 2047 को तो प्रधानमंत्री देखेंगे नहीं, इसके क्या मायने हैं? उस राजस्थानी हम सब नहीं देखेंगे, मैं खुद नहीं देखूंगा भैया।
विकसित भारत बनेगा तो। आप देख पाओगे, आपके बच्चे देख पाएंगे, वो क्या देखेंगे, कौन से स्कूल में टीचर होगा, ये आप ही बताना, तब हम तो नहीं सुन पाएंगे भैया। और जहाँ शिवराज साहब की जहाँ सवाल है, क्या कह रहे हैं, हम जमीन और जमीर खो बैठे हैं, ये कह रहे हैं जमीन खो चुके हैं और जमीर खो चुके हैं, जमीन खो रही है कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती। जिस पार्टी के प्रति देश विश्वास खो बैठा है, उसके बारे में क्या, ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, नेपाल में एक फ्लड आया जिसकी वजह से मोर देन 100 इंडियंस और इंक्लूडिंग फॉरेनर जो है मिसिंग है। वेरी सैड, इवन नेपाल एमसी और तमाम, वेरी शॉकिंग, वेरी सैड। आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू समथिंग अबाउट इट। सर एक छोटा सा सवाल है, अगर जवाब प्लीज प्लीज। मनुस्मृति को लेके असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ बोला है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया जा रहा था, तब उसकी जगह मनुस्मृति को लागू करने का एक कोशिश किए थे भाजपा और आरएसएस के लोग। तो आहिस्ता भाजपा और आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि कभी मनुस्मृति अपने पढ़े हैं, गीता रामायण तो नहीं है। मुझे लगता है कि इनको खुद वो जो वंदे मातरम नहीं आता, इससे पहले पूछो वंदे मातरम गा पाएंगे, तो पूछ लीजिए जरा, इनको खुद नहीं पता कुछ, इनको अपने धर्म का नहीं पता। अगर अपने धर्म का पता होता, जो अधर्मी बातें आज के दिन कर रहे हैं ना, वो नहीं करते।